Thank you so much, Kamal. And good morning, everyone. I'm thankful to Dr. Watts and Dr. Dhaliwal for giving me opportunity to interact with you all. And I'll try to share my expertise in whatever I have learned while going through these tools. So today's topic of discussion is managing technologies for effective teaching learning. So as you all can see that due to pandemic, education has changed dramatically with the distinctive rise of e-learning, whereby teaching is undertaken remotely and on digital platforms. So various researches also suggest that online learning has been shown to increase the retention of information and it takes less time. As you all can see that student while using these tools, when you create video, when you make educational videos, so student who miss their content classes or so they can learn later on, they can listen to the lectures later on. I'll start my presentation. So my main focus is mainly on two tools, video creation and video editing, and we'll learn some of the e-learning platforms also. I'll share my screen first. The outline of my presentation will be, first of all, we'll learn about the video creation using PowerPoint, then video creation using open source software, that is OBS. Then we'll learn video editing using OpenShot Video Editor. This is also an open source software. So then we'll learn some e-learning platforms, and then I'll tell you about how to do live streaming using OBS. So the firstly, we'll learn about a video creation using PowerPoint. So for this is a very simple tool to create video from your content. So first of all, you have to open the presentation, then go to slideshow. Then I'll explain practically. So let me first open my presentation. So I'll create the video of this presentation only. So first of all, I have opened the presentation, then go to slideshow, then record slideshow, start recording from the beginning, start recording. So you can record the narration according to the slide that is displayed on your screen. So the next, when you're done with the narration of the first slide, then you can click on enter and move to the next slide. So now you can start the narration of this slide. Like the outline of my lecture is video creation using PowerPoint, video creation using OBS, video editing using OpenShot Video Editor. Similarly, for the other slide, you can start the narration. So after you are done with the recording, and at the end, simply go to the file. You can see here the narration. The slide will show the audio also. So after that, you can go to the file, export, create a video, and the latest version of PowerPoint is showing the format of MP4 also. The version before 2006, they'll only save the WMV format. So I'll tell you how to convert WMV format into MP4 format. So I'll share my video in WMV format. To convert WMV format into MP4 format, there is a simple command named REN. So with this command, you can convert your video into MP4 format very easily. I'll tell you how. See, it is taking some time. To convert this WMV file into MP4 file, firstly I'll copy the name of the file. Then on the desktop screen, press Shift plus right click. Shift and right click and open PowerShell window here.
REN and REN space inverted commas control inverted comma space and control V. I've already copied the name dot WMV commas closed space inverted commas again again the name of the video dot mp4 and press enter. This file already exists, so I have to change the name of the file. Yes, we'll change the name of this file. Then shift right click, open PowerShell window, REN space inverted commas. I'll copy the name of the file. Now you can see the properties of this video. It has been converted into MP4 file. So just by using a simple command, you can convert the WMV format into MP4 format if you are using the older version of Microsoft PowerPoint. So you can easily convert your video from WMV format to MP4 format. So any queries till now? So if there are no questions, so we'll move to the next part. So next is video creation using OBS software. Similarly, you can record the narration for this. So for this, you have to open the OBS software. You can download it simply from Google. It's an open source software. So it will open like this. There will be no scene will be there. So I'll remove all. So when you first download this software, it will open like this. So first of all, you have to create a scene. First of all, you have to do some settings. So go to the settings and output. Convert the recording format into MP4. By default, it is given in MKV. So first of all, you have to convert the recording format into MP4. Then audio, you have to select the speakers of the system and the microphone of the system. Next, for video, select the full HD 1920 into 1080 format for both. बाय डिफॉल्ट इट हैज नॉट बीन गिवन. बाय डिफॉल्ट जो आपका फॉर्मेट होता है वो HD ही होता है. आपको फुल HD में चाहिए तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा. ऑडियो हैज ऑलरेडी बीन सिलेक्टेड. ओके, then done. Yes. Now firstly, we'll create the video using image plus audio. So you have select your microphone here. It will show here. As I'm speaking, the level is fluctuating. It means your microphone is working. Then first of all, you have to create one scene. From this plus button, you can create a scene. Yes. Now within this scene, you can add the sources. So I'm going to add an image. Browse the image.
Okay, so you have to drag this image like this and make it full screen. If you'll not make it full screen on this, then your recording will appear like this only, like a pip image. La Your background will be black and only this window will come. So if you want your video to come on a full screen, so you have to drag it like this and make it full screen. Now you have select your image source. Audio has already been selected here. Either you can select the audio from the settings that I already told you. Otherwise, you can select the audio source from here also. Audio input capture. Device your internal microphone. Okay. Now you can just click on start recording and start doing narration, and in this way your lecture will be recorded. If you want to make a video on certain image, you want to explain certain graph, so you can just select the image of that graph as a source and select any audio input source and explain that image by clicking on start recording. Then your video will be recorded. Now I'll click on stop recording. You can see your video from here. File, show recordings. So here is your lecture. Being recorded lecture is there. Narration. And in this way, your lecture will be recorded. If you want to make a video on certain image, you want to explain certain graph, so you can, okay, like this. So you can select different sources. So I have selected image plus audio. The next is image slideshow plus audio. So if you want to show some slideshow like PPT, if you want to explain some PowerPoint presentation, so you cannot drag the PowerPoint directly into the OBS. So first of all, you have to convert that PowerPoint into image slideshow. So how will you do that? I'll open one presentation. So file, save as desktop. We'll save it as a JPEG file interchange format on desktop. Save. So which slides do you want to export? I'll click on all slides. So all the slides has been converted into image. So now what will we do? We'll go to the OBS again. I'll remove this image source from here. Just right click and remove the source from here. Remove. Okay. You can remove the audio source also. Right. So now I'll select the image slideshow. Okay. So always play even when not visible. Slide mode automatic. Automatic में क्या होगा कि आपका जो स्लाइड शो है अपने आप चलता रहेगा. आप जो फर्स्ट स्लाइड की नरेशन आपकी खत्म नहीं हुई है, सेकंड स्लाइड अपने आप आ जाएगी. सो इट्स बेटर टू सेलेक्ट मैनुअल मोड यूजिंग हॉटकीज आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि नेक्स्ट स्लाइड के लिए कौन सी हॉटकी का यूज कर रहे हैं आप, और प्रीवियस स्लाइड के लिए कौन सी हॉटकीज का यूज आप कर रहे हैं. उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा. So I'll tell you how. So you can select the image files from here, add files. So I'll go to my desktop, e-learning tools. I'll select all the slides, open. Okay. Now I'll go to the settings. Hotkeys is the image slideshow. You can select the hotkeys from here. For next slide, I'll press right arrow key. For previous slide, I'll select previous arrow key, left arrow key. Then click on OK and yes. Make your slide full screen. Mic source is already selected, or you can select it from here. Audio input capture. Okay. So audio source is also been selected.
So now what you have to do, you can click on start recording. So now you can record your lecture. For the next slide, you have to press the right arrow key. Now you can start your narration for this slide also. Similarly, for other slide, you press next arrow key, right arrow key, and you can record your narration for this slide also. Similarly for other slide, and similarly for all the slides. So after you're done with your narration, you can just click on stop recording, and now file, show recordings. Here is your image recording. So now you can see slides are moving. Narration for this slide also. Similarly for other slide, you press next arrow key, right arrow key, and you can record your narration for this slide also. Similarly for other slide, and similarly for all the slides. So after you're done with your narration, you can just click on stop recording. So in this way, you can record your PowerPoint also in the form of video using this open source software named OBS. So next is, so I'll delete the source from here. So next is screen recording. For screen recording, suppose like I'm giving you a lecture on a Google Meet screen. So if you want to record that screen, what will you have to do? You just click on add the source, display capture. Okay, now your entire display is being captured. Sometimes it comes like this, so you have to drag it to make it full screen. Then only your video will be recorded as a full screen. So by doing this, after doing this, you can click on start recording and open the screen which you want to record. Okay, so for this, there are two things you have to keep in mind while doing this. So if you are giving lecture and want to record the screen, then your microphone should be enabled. And if you are not giving lecture, you want to record the screen of the expert. Suppose I am giving you a lecture from here and you want to record your screen. So in this case, your microphone should be disabled, because वहाँ पे आप जो भी बात करोगे वो भी सारी बीच में रिकॉर्ड हो जाएगी. So अगर तो आप लेक्चर दे रहे हैं तब तो आपका माइक्रोफोन शुड बी एनेबल, अदरवाइज आपका माइक्रोफोन डिसेबल होना चाहिए, अदरवाइज जो भी नॉइस होगी वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी. सो आई एम गिविंग लेक्चर फ्रॉम हियर, सो आई विल keep my microphone enable, and if you want to record the lecture of some other person, then you can disable the microphone and only enable the speakers. In this way the lecture will be recorded और कोई noise भी capture नहीं होगी. So like this, I'll start the recording and I'll record my Google Meet screen from here. I'll show you. So in this way you can do the screen recording. You can record the lecture of any expert. So after your lecture is over, you can click on stop recording. So again, you can go to the file, show recordings. Here is the recorded lecture. Start the recording. I'll record my I opened Google Meet screen, so I'll show recorded. You. So in this way you can do the screen recording. You can record the lecture of any expert. So okay. So like this, you can record your screen also. The next is, if you want to add video also, so just select a source. I'll remove this source from here. I'll select an image slideshow. Manual.
The slide mode will be manual. Add the files from here. Open. Okay. Hotkeys for the image slideshow will be right arrow key and the left arrow key. Yes. I'll make it full screen. I'll select another source. Video capture device. Okay. So I have selected my HP HD camera. If you have connected any USB camera, you can select it from here. That will come here. So you can select your USB camera from here. So I'm going to select my webcam of this system only. So you can drag this camera window from here wherever you want to place it. You can place it here. So now again, you can click on start recording. I have selected the image slideshow. Hotkeys I have already been assigned. So when you have to click on this फॉन्ट slide. विजिबल नहीं है, जो ये फॉन्ट साइज है बहुत कम है, हमें दिखाई नहीं दे रही कहीं भी जो आप स्टेप क्लिक कर रहे हैं। सर क्या विजिबल नहीं है आपको? ये फॉन्ट जो साइज है ये विजिबल नहीं है किसी को। में थोड़ा प्लीज एनलार्ज कर दीजिए इनको, या स्क्रीन को आप एनलार्ज कीजिए। पंकज सर, आप कहना क्या चाह रहे हैं? थोड़ा माइक के पास आके बोलेंगे एक बार। हाँ जी, हाँ जी सर, ये जो फॉन्ट साइज है ये विजिबल नहीं है। जो मैम क्लिक कर रही है ना, दो भी स्टेप्स दिखाई नहीं दे रहे स्क्रीन पे तो क्लियरली क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर जो मैं सेटिंग्स कर रही हूँ, हाँ जी, हाँ जी, पॉपअप मेन्यूज में जाके आप जहाँ भी आप क्लिक कर रहे हैं इनकी साइज बहुत कम, या तो स्क्रीन को एनलार्ज कर लीजिए मैम। ओके ओके सर, ठीक है सर। मोनिका, आप सेटिंग का नाम बोल दीजिए इनको कि ये लोग। हाँ सर, व्हेन आई सिलेक्टेड दिस इमेज slideshow, so the slide mode I have selected the manual using hotkeys. So to select the hotkey, you have to go to the settings. Then there is an option of hotkeys. Is it visible? You have to click this hotkeys, then come to the image slideshow. Here is the image slideshow. So for the next slide, आप कोई भी की दे सकते हैं इसमें। अभी मैं डिलीट कर देती हूँ इसको। मतलब whatever key you will press, it will come here and you जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए वही की प्रेस करनी पड़ेगी, बिकॉज यू हैव सिलेक्टेड दैट की इन द hotkey setting. So for the next slide, I'm going to give a right arrow key. For the previous slide, I'm going to give a left arrow key. So I'll close. It will say you have unsaved changes, save changes. I'll click on yes. So in this way, when I press the right arrow key, the slide will move forward. When I press the left arrow key, the slide will move backward. So in this way, you can record your lecture by using your PowerPoint presentation and by using your video. Okay, any doubt till now? So now I'll click on stop recording. I'll go to the file, show recordings. So this is my recorded lecture. I have already been assigned. So in this way your lecture will be recorded. अभी मैं delete कर देती हूँ इसको। मतलब whatever key you will press, it will come here and you जब आप recording करेंगे तो आपको next slide पे जाने के लिए वही key. So I'll close. It will say you
Okay, any doubt till now? Similarly, you can add text from here. You can select a source text. ये आ रहा है, ये छोटा सा, इसको ड्रैग करना पड़ेगा. Then again, click on image slideshow. Select slide mode manual. Select the files from here. So ये font आप कोई भी select कर सकते हैं. So in this way you can add the text as well as PowerPoint, and you can select the video also, video capture device also. So you can place it here like this. So your video will be recorded as a picture in picture effect, PIP. So now you can click on, you can start the narration. Your microphone is already been selected. So you can click on start recording and your lecture will be recorded. Right? Any doubt till now? Any question regarding OBS? So now we'll move further. So now you have learned how to create video using PowerPoint and how to create video using the software named OBS. Now I'll tell you how to do the video editing. Suppose आप वीडियो का कुछ पोर्शन डिलीट करना चाहते हैं या उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, कुछ बाहर से एनिमेशंस डालना चाहते हैं, तो उसके लिए you need to do editing. So for video editing, I'll tell you about the open source software named OpenShot Video Editor. So this is a very good choice for a beginners who want to start their YouTube channel or want to record the educational videos. So for this, I'll open the OpenShot Video Editor. This is also open source software. You just have to Google OpenShot Video Editor. So you can download it from here. It's already been there in my system, so I'm not going to download it. It's very simple. Just click on download and you can download it from here. So I'll directly open. So when you first download the software, it appears like this. So this is the project window. This is a video preview window. These are the tracks. You can see from here. Track 1, track 2, I'll make it. So these are the tracks. This is your menu bar. Here you have a file. In file, you can create a new project. You can open the existing project. It will show the recent projects that you have been working on. You can save the project to this, save project as, save project as. Then if you want to import the files, you can click on this. So this is important. Choose profile. So for YouTube, so you can select the profile from here, your video resolution, your video format from here, which you want to export the video. For YouTube, this is the best video format, HD 720p HD format. So I'll select this, close, then edit. There's a preferences. Your default language is English. So कभी कभी क्या होता है कि कोई बटन क्लिक हो जाता है और आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है. यू सिंपली गो टू द प्रेफरेंस और इसमें जो फर्स्ट वाला आइकन है वो सिलेक्ट कर लो. वो वापस आपकी बाय डिफॉल्ट जो है इसकी लैंग्वेज इंग्लिश है, ऑटोमेटिकली इंग्लिश ही सिलेक्ट हो जाएगी. देन क्लोज. You can create the title from here, title और animated title. Animated title आप directly नहीं import कर सकते हैं.
एनिमेटेड टाइटल के लिए आपको इसमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, दैट इज ब्लेंडर। एनिमेशन का सॉफ्टवेयर है, दैट इज ऑल्सो ओपन सोर्स, सो यू हैव टू प्रोवाइड द पाथ लाइक दिस। यहाँ पे आपको ब्लेंडर का पाथ देना पड़ेगा, जहाँ भी आपने ब्लेंडर डाउनलोड किया है ब्राउज करके उसका पाथ सिलेक्ट करके यहाँ पे अगर आप डालेंगे तभी आपके जो एनिमेटेड टाइटल आएंगे, अदरवाइज इसमें एनिमेटेड टाइटल नहीं आते हैं। सिमिलरली फॉर टाइटल एडिटर यू हैव टू गिव द पाथ ऑफ द इंकस्केप। दिस इज ऑल्सो एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, right? So from here, this plus button, you can add the tracks. This is a snap button. So I'll tell you how this work. I'll import two videos here, then I'll show you what is the purpose of snap tool. This is this is a trim tool. This is a razor tool or trim tool. This is a marker tool. From here you can go to the previous and next marker. So from here it will come to the center of the timeline. So I'll import some videos. You can click on file and import files. This is the one option. And the second option is you can simply drag the files here. So I'll simply drag the files. So here are some videos that, so I'll drag this video in my project window and this video and this video. So I have dragged 4 videos into my project window. So to show you how snap tool work, I'll drag 2 videos in the timeline. This is timeline. The snap tool is disabled now. So what will happen if I move this video toward the first video? It will merge like this and transition will be created. And if I enable the snap tool, I'll delete this transition. Now I'll enable the snap tool. The video will snap like this. So with the help of snap tool, आपकी वीडियो में जो स्पेस क्रिएट होगा जिसकी वजह से ब्लैक ब्लैक आएगा या फिर ट्रांजिशन क्रिएट हो रही है वो नहीं होगी. इफ यू एनेबल द स्नैप टूल इट विल स्नैप लाइक दिस. इट मींस द फर्स्ट वीडियो का एंड है ये एंड ये सेकंड वीडियो की स्टार्टिंग है और वो दोनों आपस में स्नैप हो गए. Right, and if you disable this snap tool then video will merge like this and the transition will be created. Okay, so this is all about the tools of OpenShot video editor. Now how to do editing. So first of all, कट करने के लिए जो सिंपल, I'll remove this track first, track 2. Just right click on this track 2 and remove track. Now I'm having only one track. So if you want to cut the certain portion of the video, what you have to do, just if you want to cut your video from here, select the razor tool and then take the cursor to the next part. Again select the razor tool and click here. Okay, now deselect this tool, click this part of the video and press delete. Now enable the snap tool and move the video. So in this way, certain part of your video has been removed. You can remove the certain portion of the video which is having noise or which is irrelevant. So with the help of the razor tool, you can delete that part. So this is first how to trim the video. The second is
if you want to give a time lapse effect to your video, how will you do this? Time lapse means if you want to make your video slow motion or fast forward. So for that, take the cursor to the beginning, right click, go to time, fast forward 8 times fast. इससे क्या होगा, आपकी वीडियो जो है वो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगी. अभी इस पे जो थोड़ा लैगिंग इफेक्ट आ रहा है, जब आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर दोगे तो बिल्कुल कोई भी लैगिंग नहीं आएगी. अभी रेंडर होने की वजह से इसमें से कुछ लैगिंग इफेक्ट आता है जब रेंडर होती है, अदरवाइज इसमें कोई भी लैगिंग इफेक्ट नहीं होगा जब आप इसको सेव कर दोगे. ठीक है. Similarly, if you want to create a slow-mo effect, Control Z. This is your original video. Move the cursor to the beginning. Click on right click video. Click on time. Slow. 1/8x टाइम इसको स्लो कर दो. वीडियो की ड्यूरेशन देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है. So in this way, you can create the time-lapse effect in your videos. You can fast forward your video and you can create the slow motion effect. Right? Similarly, if you want to add audio, I mean आपकी जो पुरानी ऑडियो है that is not good, तो आपने ऑडियो सेपरेट रिकॉर्ड की है, आप उस ऑडियो को ऐड करना चाहते हैं उस वीडियो में. So first of all, simply drag that audio file into the project window. Simply drag the audio file into this project window. And अभी इस वीडियो में कोई ऑडियो नहीं है. Control Z करके मैं प्रीवियस वीडियो पे वापस आ रही हूँ. So what you have to do, right click on this video, separate audio, single clip. इस वीडियो में कोई ऑडियो थी नहीं तो सेपरेट नहीं हुई. अगर इस वीडियो में ऑडियो होती तो वो ऑडियो फाइल आपकी सेपरेट नीचे ट्रैक पे चली जाती. ठीक है. So now add track from here, add track below. Just simply right click on the track window and add track below. Drag the audio file. I'll come here. कर्सर को फर्स्ट वीडियो के एंड पे ले जाकर नीचे वाली वीडियो सिलेक्ट, राइट क्लिक, स्लाइस, कीप लेफ्ट साइड. तो आपकी जो ऑडियो है वीडियो के इक्वल हो गई है. I have not. Just 1 minute. I have not selected. I'll drag the audio file again. Cursor, right click on this video, slice and keep left side.
Now I'll play my video again. So in this way, an audio file has been added to the video. गूगल मीट पे ऑडियो आ नहीं रही होगी, है ना कमल? Okay, so in this way you can delete the previous audio in the video, and you can select the new audio by doing this. Okay, so the next is how to give transition and effects to your video. Suppose I have selected this video and this video. So right now you can see there is no effects or transition. To give any समटाइम्स अभी देखो मुझसे कुछ भी क्लिक हुआ तो जो व्यू है वो चेंज हो गया, ट्रैक्स आर नॉट देयर, सो यू कैन क्लिक ऑन व्यू, व्यूज एंड सिंपल व्यू. आपका पहले वाला व्यू जो है वो वापस आ जाएगा. सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, simply go to the transitions. There's a lot of transitions here. So you can select any transition. I'll select wipe and drag it here. You can adjust the size of the transition. So, अभी देखो आपकी फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो की स्टार्टिंग में एक ट्रांजिशन ऐड हो गई है, वाइप डायगनली. ये डायगनली आपकी वाइप हो रही है एंड नेक्स्ट वीडियो विल स्टार्ट. पहले जो आपकी कोई ट्रांजिशन नहीं थी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, अब यहाँ पे आपने एक ट्रांजिशन ऐड कर ली है. ओके, so the next is I'll delete these videos from here. अभी तक कोई डाउट है? Any doubt till now? Yes, participants. कोई डाउट है अभी तक?
Any doubt till now? नहीं है. So now I'll tell you how to create a split screen effect. So I'll drag 4 videos. Add track, and I'll drag. Okay, so ये 4 videos को आपने 4 different tracks पे रख लेना है. So now we'll create a split screen effect. I'll make the duration of the videos equal first. So I'll click this video, right click, slice, keep left side. Similarly for this video, right click, slice, keep left side, slice and keep left side. So now I'll go to the effects. I'll click on crop effect and drag it to all the videos, first, second, third and fourth. This video also I'll drag the crop effect. Similarly for other 2 videos. So you can see the C is coming on the top of the video. It means crop effect has been added. Just right click on this C and go to the properties. So for this video, the scale X 0.50 and scale Y 0.50. आप आपके फर्स्ट वीडियो का साइज इतना हो गया. अब आप सिंपली इसको या तो ड्रैग करके सिंपली इधर ले जाओ, कंट्रोल Z, or you can do the setting from here. This gravity, it's not working. आपकी ये वीडियो इस कॉर्नर में आ गया. इसको सिंपली ड्रैग करके इसको सेट कर लो. सिमिलरली फॉर सेकंड वीडियो, प्रॉपर्टीज में जाना है आपने.
scale x and scale y 0.50. इसको आप सिंपली ड्रैग करके सेट कर सकते हो. This taking. The third, this video you can again go to the properties. You can go to the scale x and scale y. Similarly for this video. बस इतना याद रखना, आपका जो कर्सर है वो बिगनिंग पे होना चाहिए. अगर आपका कर्सर कहीं बीच में होगा तो इफेक्ट वहीं से लगना स्टार्ट होगा. Okay, this video I'll take to the यूजली क्या होता है, मेरा ये वर्क नहीं कर रहा ग्रेविटी. यहाँ से पोजीशन सेट करना है, बहुत इजी होता है. आप ग्रेविटी पे क्या करेंगे, ग्रेविटी पे आपको ऑप्शंस आते हैं, टॉप लेफ्ट, सेंटर, टॉप सेंटर, सेंटर, टॉप राइट, बॉटम लेफ्ट, बॉटम राइट. तो यहाँ से आप इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड इसको क्या हुआ है, ये मेरा ग्रेविटी वर्क नहीं कर रहा. अदरवाइज आप इसको सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं. मेरे सिंस माय ग्रेविटी इज नॉट वर्किंग, सो मुझे मैनुअली इसको ड्रैग ड्रॉप करना पड़ रहा है. सिमिलरली इसकी प्रॉपर्टीज में जाकर भी हमने
यू कैन सी हियर आपकी चारों वीडियोस जो हैं, फर्स्ट इज ईयर, सेकंड इज ईयर, थर्ड इज ईयर, फोर्थ इज ईयर। उसको अच्छे से सेट करके आपका जो स्प्लिट स्क्रीन का इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। राइट, इनका साइज चारों का इक्वल है, तो ग्रेविटी से ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो ये फुल स्क्रीन पे आपकी चारों वीडियोस एक साथ वर्क करेंगी। Any doubt till now? Shall we move further? Hello. Yes, participants, any doubt till now? So these were some of the basics of the OpenShot video editor. If you want to learn the whole video editing, you can join our next course. So the lecture on OpenShot video editor, full lecture on OpenShot video editor will be there. So the next is how to choose e-learning platforms. The purpose of a successful online education platform in India is that it creates a robust learning experience that feels like a classroom experience, offering traditional classroom characteristics but either online or through a device, for example laptop or mobile desktop. तो जब भी आपको कोई ई लर्निंग प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है, वो ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो क्लास है वो इंटरेक्टिव रहनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दिस कि एक बंदा बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है। ठीक है, सो सम ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट, आपकी स्टूडेंट की एंगेजमेंट प्रॉपर रहनी चाहिए। सो कुछ जो प्लेटफॉर्म्स हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स, दीज आर गूगल मीट, वेबएक्स, जियो मीट, रेनबो, गो टू मीटिंग्स, ब्लैक बोर्ड, मीटिंग बर्नर, जूम। So we are using Google Meet. Google Meet is a very simple video conferencing tool. आपको क्या है इसमें, गूगल मीट का अगर आप पेड वर्जन यूज कर रहे हैं, आपको अटेंडेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू यूजिंग द पेड वर्जन ऑफ गूगल मीट, अटेंडेंस विल ऑटोमेटिकली कम to your registered email ID. Simply what you have to do, how to create a session using Google Meet. Simply just log into the Google. Mine is already logged in. So just click on this application apps button, Google Apps, go to the calendar. From here you can create an event. Lecture on digital electronics. Okay, date you can select from here. From आप सेशन पूरा भी select कर सकते हैं, from 25th March to, you can go to the more options. So this lecture will be for the whole semester till August 31. So the link will be the timing of the lecture is 11:30 a.m. to 12:30 p.m. You can create the link from add conferencing details. आपका link create हो जाएगा which will be the same for whole session. तो आपका lecture ये all day है, तो you can click on all day also from March 25th to August 31. अगर alternate days पे है, weekly on Friday, monthly on 4th Friday, तो आप custom भी select कर सकते हैं इसमें, जो भी आपकी लोकेशन है आप डाल सकते हैं यहाँ पर। Okay, you can add the email ID of the students here. Okay.
यू कैन ऐड द नोटिफिकेशन ऑल्सो कि जब लेक्चर स्टार्ट होगा उसके 10 मिनट्स पहले स्टूडेंट को जो है नोटिफिकेशन मेल जाएगी कि ये लेक्चर इज अबाउट टू स्टार्ट. यू कैन ऐड दैट नोटिफिकेशन फ्रॉम हियर. एंड नेक्स्ट you can add the description of the lecture here. You can add the attachment also. You can add meeting notes, you can add the timetable, whatever you want to add you can add the attachment from here. Okay, then click on save. तो जिस जिस स्टूडेंट का आपने ईमेल आईडी डाला है उनको जो है वो लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका जो लेक्चर है पूरे सेमेस्टर चलेगा विद द सेम लिंक थ्रू गूगल मीट. अब गूगल मीट के फायदे क्या हैं? जो आपकी इंटरनेट बैंडविड्थ होती है एज कंपेयर टू अदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स, जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी कम होती है इसमें. जो गूगल मीट में है आपकी जो डेटा इतनी जल्दी खत्म नहीं होता. ओके, जो टाइम लिमिट है गूगल मीट की, आपका इसकी कॉल कभी अपने आप डिस्कनेक्ट नहीं होती है. जैसे फ्री वर्जन्स में क्या होता है, गूगल मीट जैसे वेबएक्स हो गया, जूम हो गया, इसकी जूम की 40 मिनट के बाद एक बार कॉल डिस्कनेक्ट होती है, उसके बाद आपको दोबारा ज्वाइन करनी पड़ती है. एंड इफ़ यू आर यूजिंग द पेड वर्जन तब भी आपकी 24 आवर्स तक की कॉल चलती है. गूगल मीट में ऐसा कुछ नहीं है, आप कॉल जब तक चलाना चाहते हैं वो तब तक चलती है. प्राइसिंग डिटेल्स आर बेसिक ₹125 पर मंथ. सिमिलरली फॉर अ बिजनेस एंड एंटरप्राइज वर्जन के प्राइस आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट पे इनकी मेंशन होते हैं. सो सबसे रीजनेबल जो है आपको गूगल मीट ही पड़ता है. ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट्स गिवन ऑन माय स्क्रीन फॉर ऑल द 4 टूल्स. Then next, the participant limit. अगर if you are using the free version of Google Meet then it's 100 in a free version. Basic version में भी आपको 100 ही मिलती है. Business में 150 and maximum is in enterprise version 250. But in case of WebEx and Zoom, the participant लिमिट जो है वो आपकी 3000 तक भी है. सिस्को वेबएक्स में वेबएक्स के 3 पार्ट्स हैं, मीट, ट्रेनिंग एंड इवेंट. इवेंट में जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट लिमिट है दैट इज 3000. बट इन केस ऑफ जूम इट इज 500. तो गूगल मीट में जो है पार्टिसिपेंट लिमिट जो है वो कम है एज कम्पेयर टू गूगल सिस्को वेबएक्स एंड जूम. एक्सटर्नल कैमरा अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं चारों में कर सकते हैं. म्यूट ऑल का ऑप्शन अब आपके पास चारों में ही होते हैं. सो रियल टाइम शेयरिंग, इवन गूगल मीट में भी व्हाइट बोर्ड भी है. अब तो रिकॉर्डिंग आप सब में कर सकते हैं, जियो मीट में नहीं. जियो मीट तो अब बंद ही हो गया है. स्ट्रीमिंग सिर्फ गूगल मीट में कर सकते हैं, वो भी जो स्ट्रीमिंग है मतलब जो वर्जन आपने लिया हुआ है. मान लो आपने एंटरप्राइज वर्जन लिया तो आप अपने एंटरप्राइज के अंदर अंदर ही स्ट्रीमिंग कर सकते हैं. अगर आपको स्ट्रीमिंग बाहर से यूट्यूब पे स्ट्रीम करना है तो आपको OBS ही यूज़ करना पड़ेगा. आई विल टेल यू हाउ टू डू स्ट्रीमिंग यूजिंग OBS. So these are the basic things that are available on website also. So now I'll tell you how to do live streaming using OBS. OBS के थ्रू मान लो आपका जो लेक्चर है जो अभी चल रहा है उसको आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हैं. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली गो टू द YouTube channel on which you want to stream. Click on youtube.com. So just click on this icon, go live. From here at the top right corner, click on schedule stream, create new, expert lecture on managing tools. ये मैंने अपनी स्ट्रीम का नेम दे दिया. इट्स फॉर एजुकेशन पर्पस. You can select whether it's made for kids or not. You can select any of the option. Now click on next. Next, the stream will be public. You can select the timing of the stream. आप कब अपना लेक्चर जो है कब हो रहा है उसको कब स्ट्रीम करना चाहते हैं. You can select it from here. I'll stream it now only. So for 25th March 11:25 AM, done.
अब आपकी यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रीम की जनरेट हो जाएगी। ये स्ट्रीम की, ये जो है स्ट्रीम की, आपको ये की कॉपी करनी है। नाउ गो टू द ओबीएस सेटिंग्स। ओबीएस में आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, स्ट्रीम में जाना है और ये स्ट्रीम की यहाँ पे डाल देनी है, कंट्रोल वी। ओके, आपका जो ओबीएस है अब कनेक्ट हो गया है गूगल मीट से। अब आप क्या करेंगे, स्टार्ट स्ट्रीमिंग। यस, यहाँ पे आप अपना डिस्प्ले कैप्चर कर लेते हैं हम। ये सोर्स जो है मैं रिमूव कर रही हूँ। So I'll select the source as a display capture. Okay. Now my display is being captured. So अभी जो मैं लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ अपनी गूगल मीट की डिस्प्ले जो स्क्रीन है उसको लाइव स्ट्रीम करूंगी। Start streaming I've already pressed. Now I'll go to the YouTube again. So यहाँ पे जो गो लाइव ऑप्शन है वो इनेबल हो गया है जैसे ही मैंने स्टार्ट स्ट्रीम की। हमने स्ट्रीम की वहाँ कॉपी की ओबीएस में। उसके बाद हमने स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे क्लिक किया तो स्ट्रीम की और इसकी कनेक्ट हो चुकी है वो एनकोडर से, जो ओबीएस एनकोडर है। तो जब हमने स्टार्ट स्ट्रीमिंग किया यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन इनेबल हो गया है। नाउ यू कैन क्लिक ऑन गो लाइव एंड ओपन द स्क्रीन विच यू वांट टू live stream. So now my this screen is being live streamed. I can show you, I can give you the link. uh, so I live stream this lecture on the channel NCTL. अभी देखो ये एक्सपर्ट लेक्चर ऑन मैनेजिंग टूल्स ये लाइव चल रहा है। इस पे जो भी मेरी स्क्रीन पे है मैंने डिस्प्ले कैप्चर किया है। ओबीएस में मैं जो भी कैप्चर करूंगी वही लाइव स्ट्रीम होगा। तो मैंने डिस्प्ले कैप्चर की हुई है तो मेरी डिस्प्ले ही लाइव स्ट्रीम हो रही है। आप सोर्स कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जो भी सोर्स सिलेक्ट करेंगे ऑन द चैनल एनसीटीएल। Okay, so now if you want to end this stream, simply click on this live stream, end stream, and stop streaming also. Now your stream has been ended. आपका जो लेक्चर है यहाँ पे खत्म हो गया। ये लाइव चल रहा है। इस पे जो भी मेरी स्क्रीन पे है मैंने डिस्प्ले कैप। ठीक है, एनी डाउट टिल नाउ? यस पार्टिसिपेंट, आपको कोई डाउट है आज के लेक्चर में अभी तक? नो मैम। Okay, so that's all from my side. Thank you so much.